तो आपका पक्षकार अगर आपको सही जानकारी नहीं बता रहा तो आप कोर्ट को गुमराह कर देंगे। नहीं, आई एम सीइंग इज कंसिस्टेंटली ऑब्जर्विंग कि आप जो है बहुत ही अलग प्रकार की बहस करते हैं। यू थिंक दैट यू हैव अ राइट ओवर द कोर्ट, आपको मिलता होगा किन्हीं कोर्ट्स में फेवर, बट दिस इज नॉट वन ऑफ द कोर्ट्स व्हिच विल गिव यू एनी फेवर। my lord, the petitioner the SP as per Annexure P1, my lord, one increment in 1 year से 9 कम्युनिटी इफेक्ट से रोक दिया था जी। पेज 14 my lord। जी पढ़िए। मतलब लास्ट का पढ़ लूं, पूरा ही पढ़ लूं? जैसी आपकी मर्जी। मतलब ये जांच उत्पत्ति में जांचकर्ता अधिकारी द्वारा किए गए साक्ष्य विश्लेषण एवं समीक्षा उपरांत निकाले गए निष्कर्ष से सहमत होकर अनुशासित अधिकारी द्वारा आरोपी प्रधान आरक्षक के विरुद्ध 21/5/4 एक वर्ष के लिए रोकी गई थी। ठीक है, चलिए फिर एक वर्ष के लिए रोक दी गई थी। हाँ। 141 दिन 3 बार में अनुपस्थित रहा, इसको हेपेटाइटिस बी हो गया था। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए फिर क्या हुआ? मतलब इसके बाद सोमोटो लिया डीआईजी ने। हाँ। एनेक्जर P2 पेज 16। हाँ। और इसमें इन्होंने कहा कि ये जो इन्होंने दिया है ये दंड कम है, इनको सेवा से पृथक किया जाए, पेज 18। इसके ऊपर तो लॉ है, सोमोटो रिवीजन में लेंगे। शो कॉज नोटिस दिया था आपको? दिया था सर। सुनवाई का मौका दिया था? जी सर। माय लॉर्ड इन्होंने शोकाज नोटिस दिया, ऐसा कहीं इसमें है नहीं, लेकिन रिकॉर्ड में है ना सर। रिकॉर्ड देख लो माय लॉर्ड। मेरे रिप्लाई में भी सर, मेरे रिप्लाई में भी लिखा है। ठीक है, रिकॉर्ड दिखाइएगा, बोलिए। और इसमें ये है माय लॉर्ड के रोज रूल 15 में जजमेंट है माय लॉर्ड। रूल 15 में इनको हमें पूरा मौका देना चाहिए था। कल तो आप आए थे ना? ठीक, कुछ नहीं दो ना, चाप को दो, फ्लैग करके देंगे। इसमें एमपी एनेक्जर P2 is also stated that in the sir। वो जांच में भी सारे डॉक्यूमेंट मैंने हेपेटाइटिस बी के दिए थे। एक सेकंड। माइल
कहाँ है आपके चिकित्सा प्रमाण पत्र? महिला रिज्वाइंडर के साथ पेश किया हमने। हाँ दिखाइएगा। आईए नंबर 2715 2000। ज्वाइंटर के साथ पेश किए ना आपने? जी। आइए नंबर एप्लीकेशन 2715 जी। नहीं, 2715 हाँ इसी में बताइए क्या दस्तावेज है, क्या है तो दिखाइएगा। सर्टिफिकेट है ये तो जी। किसी प्राइवेट डॉक्टर का। ये सर्टिफिकेट अरे दिख वकील रहा है। साहब जो आपसे पूछ रहे हैं उतना बताइए। प्राइवेट डॉक्टर का सर्टिफिकेट है, पहले क्यों नहीं पेश हुआ? क्योंकि फॉर्म 3 को पेश करने का एक समय होता है। महिला वो रिकॉर्ड में है, पेश किया है हमने, पहले भी दिया था। अपने ऑफिसर्स को दिया है हमने। कहाँ है वो एप्लीकेशन पावती कहाँ है? वेयर इज दैट? क्योंकि इसमें तो लिखा हुआ है। मतलब वो सारी चीज तो रिकॉर्ड में है। कहाँ है मेरे पास पावती नहीं है। ओरिजिनल रिकॉर्ड बुलवा लेते हैं, डिपार्टमेंट इंक्वायरी में पेश किया होगा ना आपने। मतलब इस रिकॉर्ड में भी एक सेकंड, आपसे जो पूछना होता है इंक्वायरी डिपार्टमेंट इंक्वायरी में पेश किया है ना आपने? डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तो हुई नहीं सर। इंक्वायरी हुई है ना? ये क्या आरोप पत्र दिया आप ऐसे? बस केवल आरोप पत्र दे दिया उन्होंने। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी कुछ नहीं। ये कथन गलत है, ये कथन जो लिए गए हैं ये कथन हुए ना बहुत सारे। ये PW1 और सब जो लिखे तो सब हुए हैं, एक्सपायरी है। तो आप नहीं जाएंगे तो क्या करा जाएगा? अगर आप नहीं जाएंगे तो क्या किया जाएगा? आपके घर आएंगे बुलाने के लिए? पूरी इंक्वायरी हुई है आपकी, सबके कथन लगे हुए हैं। आपका कथन लगा है, रामचरण सिसोदिया आपका नाम है जी। आपका कथन लगा हुआ है 3/4/2004 का। आप बोलते हैं आपको कुछ मालूम ही नहीं है। इस मतलब तरीके से थोड़ा ना बहस की जाती है वकील साहब। इस समय महिला जो सर्टिफिकेट हमारे पास है हम तो वही बताएंगे, हमको क्या मालूम कि तो आपका पक्षकार अगर आपको सही जानकारी नहीं बता रहा तो आप कोर्ट को गुमराह कर देंगे। नहीं। आई एम सीइंग इज कंसिस्टेंटली ऑब्जर्विंग कि आप जो है बहुत ही अलग प्रकार की बहस करते हैं। यू थिंक दैट यू हैव अ राइट ओवर द कोर्ट। आपको मिलता होगा किन्हीं कोर्ट्स में फेवर, बट दिस इज नॉट वन ऑफ द कोर्ट्स विच विल गिव यू एनी फेवर। फॉर मी एवरीबडी इज इक्वल। जी। तो आप वो अपना एटीट्यूड छोड़ के आइए जहां पर कि आप कुछ लोगों के चाहते होंगे और आपको फेवर मिलता होगा। या कानून की बात करिए, कानून से बात करिए। आप गुमराह कर रहे हैं कोर्ट को कि इंक्वायरी हुई नहीं। आपके कथन लगे हुए हैं इंक्वायरी के। बताइएगा इनमें कहां पर कागज पेश किए हैं आपने अपने बीमारी के, दीजिएगा इनको। दूसरे कलर का फ्लैग दीजिएगा, दूसरे कलर का फ्लैग लगा के बताएंगे कौन से। ये पूरे डिपार्टमेंट इंक्वायरी का रिकॉर्ड है ना ये? हाँ सर। हाँ बताइएगा कौन सी बीमारी के कागज प्रस्तुत किए हैं आपने। ये है। जी देखिएगा। इंटरवीनल पीरियड का क्या सर्टिफिकेट है? ये 6/4/2003 से 14/5/2003 का एक सर्टिफिकेट है। जी। और उसके बाद में दूसरा जो सर्टिफिकेट है वो 7/7/2003 को जारी किया गया है। 20/5/2003 से 20/7/2003 तक 2 महीने का।
फिर ये 15/5 से 19/5 तक का क्या बीमारी है आपको? बीमारी तो एक ही है महिला, अरे तो कंटिन्यू सर्टिफिकेट की कंटिन्यूटी होगी नहीं होगी? आप डॉक्टर बदल के कुछ भी ले आएंगे? क्या कहता है मेडिकल अटेंडेंस रूल्स? इफ यू आर सिक एंड वेयर आर दी ट्रीटमेंट पेपर्स? कौन सी दवाई खरीदी आपने, कौन सी जांच कराई? हेपेटाइटिस की तो जांच होती है, कहाँ है जांच रिपोर्ट? ब्लड वो तो नहीं है, बट तो नहीं, डॉक्टर साहब के खिलाफ कार्रवाई करने को बोलना पड़ेगा कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। इसमें मध्य प्रदेश पुलिस रेगुलेशन में है क्या 226 में माइनर दीजिएगा, पुलिस रेगुलेशन दीजिएगा, क्या लिखा है 226 पढ़िएगा। और फिटनेस आप लेते हैं, माइलर इसमें ये सिविल सर्जन साहब के खिलाफ भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये डॉक्टर कौन है, पीसी, 5 वीक का जो है आपको एब्सेंस का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, इन्होंने इलाज किया नहीं। 20 साल तक तो आप डॉक्टर कालांतरी के इलाज में थे, तो इन्होंने सर्टिफिकेट कैसे दे दिया? मुंबई के डॉक्टर के उसमें आप इलाज में थे और फिटनेस ये दे रहे हैं। 226 पढ़िएगा पुलिस रेगुलेशन। अपराध जिसके लिए दंड दिया जाए, मतलब इसमें इन्होंने ये कहा आप है, अंग्रेजी की किताब पढ़िए, हाईकोर्ट की लैंग्वेज इंग्लिश है। मतलब इसका पैरा 6 देखेंगे, पैरा 4 देखेंगे, हाँ, पैरा 4 पढ़िए। इसमें लिखा कि इतना बड़ा दंड नहीं देना चाहिए इनको। अब इससे बड़ा दंड तो सिपाही के लिए कुछ हो ही नहीं सकता है, टर्मिनेट ही कर दिया। तो जहां तक हो सके उसको सुधारने का अवसर देना चाहिए। इतना बड़ा इसमें लिखा तो है आपके, इसमें पढ़िए तो आप दंडादेश में कितनी बार आपके खिलाफ सजाएं दी गई हैं, लिखा है ना इसमें। नहीं, वो 27 साल की नौकरी में बड़ी केवल सजा, एक बार बीमार एक हुआ। बड़ी सजा एवं 33 छोटी सजाएं मिली हैं। अधिकांश सजाएं अनाधिकृत गैर हाजिरी के लिए मिली हैं। बस केवल 27 साल की सर्विस में ये एक बार बीमार हुआ है हेपेटाइटिस बी से, और उसी में ही इसको ये सजाएं दी गई। पहले तो इसको प्रमोशन भी दिया गया, सिपाही से हवलदार बना दिया। यदि इसका ये आचरण रहा होता तो सिपाही से हवलदार क्यों बनाते? गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट नहीं बनाया। 27 साल में बीमार हो गया। देखिएगा, पिटिशनर्स कंटेंशन इज दैट द punishment which has been passed by the, नहीं ऐसा लिखिएगा, petitioner's contention is that petitioner is aggrieved of the order dated मतलब मैंने 16/4/2005 एक और जजमेंट दिया है महिला ने, देख लिया है। उसमें ये है कि बिल्कुल यदि एब्सेंस है, छतरपुर रेंज छतरपुर, whereby petitioner has been inflicted with punishment of termination from service, full stop. He is also aggrieved of the order dated 9/12/2005 passed by Inspector General of Police Sagar Jones Sagar, confirming the punishment imposed by the Deputy Inspector General of Police Sagar, full stop. Petitioner is also aggrieved of the order dated 10/5/2006 passed by the Director General of Police Madhya Pradesh, whereby the Director General of Police dismissed the mercy appeal of the petitioner, and thereafter petitioner is also aggrieved of the order dated 12/8/2008 passed by the State Government Home Department, whereby has State Government too has dismissed the mercy petition filed by the petitioner, full stop. Next para. Petitioner's contention is that wide order dated 25/7/2004 Superintendent of Police Panna had imposed penalty of stoppage of 1 increment with cumulative effect for a period of 1 year on account of unauthorized absence from 9/4/2003 to 28/8/2003, that is for a period of 141 days. Full stop. Thereafter, this matter was taken up in suo motu revision by the Deputy Inspector General of Police, who, without affording any opportunity of hearing, passed orders of dismissal of the petitioner
on 16/4/2005 as contained in Annexure P2. Next para. Shri, it is submitted that any reliance is placed on the orders of coordinate bench of this court in WP 17585/2019 decided on 23 अगस्त 2023 within bracket Ashish Mishra versus State of Madhya Pradesh and others. So also in case of WP 8268/2013 within bracket RK Dikshit versus State of Madhya Pradesh decided on 19 July 2023 whereby the impugned order of penalty was quashed and the matter was remitted to the disciplinary authority to pass an order afresh imposing any other penalty which is in proportion to and in consonance with the charges. Next pair. Shri Manaswani Verma submits that petitioner's contention that no opportunity of hearing was given to him is factually incorrect. Petitioner was given a show cause notice and thereafter it has been noted by the Superintendent of Police as well as the DIG that when show cause notice was issued to the petitioner, he did not file any reply and not produced any representation. Thereafter, presuming that petitioner was not interested in giving any defense, impugned order was passed by the Superintendent of Police, stopping one increment with cumulative effect for a period of 1 year. Full stop. The Deputy Inspector General of Police found the punishment to be disproportionate and thereafter reiterating the charges gave an opportunity to evident from his communication dated 11/1/2005. Full stop. It is submitted that petitioner had not produced relevant material though he had submitted his reply on 27/11/2005 as is available in record and then the impugned order was passed by the Deputy Inspector General of Police. Full stop. These orders have been affirmed by the Inspector General of Police, Director General of Police, and the state government as is submitted by the petitioner counsel. Full stop. It is submitted that looking to the fact that petitioner was guilty of one major penalty and 33 small penalties during his period of service and therefore looking to his period of unauthorized absence, he has been punished. Full stop. It is also pointed out that there is ambiguity in the medical certificates produced by the petitioner before the disciplinary authority. Full stop. First certificate is from one Dr. V.K. Shrivastava, MBBS MD of Kanpur, certifying that he was suffering from hepatitis with acute abdomen from 6/4/2003 to 14/5/2003 and was advised bed rest for 39 days with effect from 6/4/2003 to 14/5/2003. Full stop. No medical prescriptions or the bills for purchasing medicines or undergoing the test so to diagnose hepatitis were produced to substantiate this medical certificate. Later on, another medical certificate dated 7/7/2003 was produced as was issued by one Dr. O.R. Kalantari of Bombay, Gulaba Market, Mumbai,
showing that petitioner was under his treatment from 20-5-2003 to 20-7-2003. Full stop. There is gap of about 5 days in when the earlier certificate was issued by Dr. V.K. Srivastav and the one which was issued by Dr. Kalantari. Next para. Thereafter, another certificate of fitness was produced as was issued by the authorized medical officer of the primary health center Devendra Nagar district Panna on 22-7-2003, showing that petitioner had attained fitness to join his duties on 22-7-2003. But as is evident from the impugned order annexure P1, petitioner had remained unauthorizedly absent from 9-4-2003 to 28-8-2003. Full stop. Thus, petitioner is required to explain that when he was absent, he was given fitness on 22-7-2003, then why he was absconding from work up till 28-8-2003 when he had given his joining. Full stop. There is no explanation for such absence, though another certificate has been produced by the same doctor dated 25-8-2003. Full stop. It is not clear that how a same doctor could have issued two certificates, one on 22-7-2003 and another on 25-8-2003, which is a serious matter which needs investigation in regard to the conduct of the doctor. But that being not the subject matter of this court, comma, it is submitted that the conduct of the petitioner justifies imposition of such major penalty. Next pair. The law laid down in 2015 to SCC 610. DG. In case of Union of India and others versus P. Guna Sekran 2015 का 2 SCC 610 is that only under certain circumstances court can interfere in the with the disciplinary proceedings. Full stop. It is held that High Court in exercise of its powers under Article 226 and 227 cannot venture into reappreciation of evidence or interfere with conclusions in inquiry proceedings if the same are conducted in accordance with law or go into reliability oblique adequacy of evidence, comma, or interfere if there is some legal evidence on which findings are based or correct error of fact however grave it may be, comma, or go into proportionality of punishment unless it shocks conscience of court. Next para. When these facts are taken into consideration, comma, looking to the fact that petitioner had put in 27 years of service and was visited only with one major penalty and 33 small penalties, comma, order of termination cannot be sustained in the eyes of law, especially when Supreme Court in case of Krishna Kant B. Parmar versus Union of India and another 2012 AIR SCW 1633 has observed that within inverted commas 16 dot the question whether फिर within double inverted commas unauthorized absence from duty inverted commas close amounts to failure of devotion to duty or behavior unbecoming of a government servant
cannot be decided without deciding the question whether absence is willful or because of compelling circumstances. Full stop. Next para. 17. Dot. If the absence is the result of compelling circumstances under which it was not possible to report or perform duty, such absence cannot be held to be willful. Full stop. 18. Next 18. Absence from duty without any application or prior permission may amount to unauthorized absence, comma, but it does not always mean willful. Full stop. There may be different eventualities due to which an employee may abstain from duty, comma, including compelling circumstances beyond his control like illness, comma, accident, comma, hospitalization, etc. But in such case, the employee cannot be held guilty of failure of devotion to duty or behavior unbecoming of a government servant. Dot inverted commas close. Next para. In view of such ratio of judgment and looking to the punishment which has been imposed by the appellate authority in a suo motu revision, comma, this court is of the opinion that punish at this distance of time, instead of remitting the matter to the disciplinary authority, comma, punishment of termination can be substituted with that of compulsory retirement, entitling the petitioner to the consequential benefits of compulsory retirement. In above terms, petition is allowed in part and disposed of.